Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of business research. This is week 16 and lecture number 16. आज का हमारा टॉपिक है द रिसर्च रिपोर्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के बारे में बात की और आज हम बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। So the learning objectives of this lecture are introduction, the written report, purpose of the written report, characteristics of a well-written report, and contents of the research report. So ये हमारे इस lecture के learning objectives हैं। Starting with introduction. The key purpose of any research report is to offer a clear description of what has been done in the various stages of the research process. Hence, a research report may possibly include information on the formulation of the problem statement, a critical review of the literature, the development of a theoretical framework, the collection of data, the analysis of the data, and the interpretation of the results. अगर हम रिसर्च रिपोर्ट के की पर्पस की बात करें तो रिसर्च रिपोर्ट का की पर्पस ये होता है कि हमने एक क्लियर डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि हमने रिसर्च प्रोसेस के वेरियस स्टेजेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की और वेरियस स्टेजेस में क्या हुआ। सो हम कह सकते हैं कि एक रिसर्च रिपोर्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फॉर्मुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इसमें क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को किस तरह से डेवलप किया गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया गया इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डेटा एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन होती है। सो आपकी रिसर्च रिपोर्ट में ये तमाम चीजें शामिल होती हैं और इसका की पर्पस क्या होता है कि हमने ये बताना होता है कि रिसर्च प्रोसेस को हमने किस तरह से परसू किया। Writing the report concisely, convincingly, and with clarity is perhaps as important as conducting a rigorous research study. Indeed, a well thought out written report and oral presentation are critical. The exact contents and organization of both modes of communication, the written report and oral presentation, depends on the purpose of the research study and the audience to which it is targeted. अब एक कंसाइज और एक कन्विंसिंग रिसर्च रिपोर्ट को लिखना, एक क्लियर रिसर्च रिपोर्ट को लिखना उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक रिसर्च स्टडी, रिगरस रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करना। यानी एक रिगरस रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के बाद आपके लिए जरूरी होता है कि आप एक कंसाइज और क्लियर रिपोर्ट लिखें, एक कन्विंसिंग रिपोर्ट लिखें ताकि आपके ऑडियंस, आपके रीडर्स को समझ आए कि आपने रिसर्च प्रोसेस के दौरान क्या किया। सो हम कह सकते हैं कि एक वेल थॉट आउट रिटन रिपोर्ट और ओरल प्रेजेंटेशन बहुत क्रिटिकल होते हैं। अब एग्जैक्ट कंटेंट्स क्या होंगे रिपोर्ट के और रिपोर्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, प्रेजेंटेशन में क्या कंटेंट्स होंगे और इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपके ऑडियंस कौन है और रिसर्च स्टडी का पर्पस क्या था। सो आपके ऑडियंस और रिसर्च स्टडी का पर्पस ये डिफाइन करेगा कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट में कौन से कंटेंट्स होंगे और आप इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। द रिटन रिपोर्ट. The written report starts with a description of the management problem and the research objective. This allows the reader to quickly become familiar with the why of the research project. The written report should also allow the reader to weigh the facts and arguments presented therein, to examine the results of the study, to reflect on the conclusions and recommendations, and eventually to implement the acceptable recommendations presented in the report, with a view to closing the gap between the existing state of affairs and the desired state. अब रिसर्च रिपोर्ट को आप स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन के साथ, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैनेजमेंट प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, आप पर्पस को डिस्क्राइब करते हैं कि किस पर्पस के तहत आपने इस रिसर्च को कंडक्ट किया। अब जब आप ये एक्सप्लेन करते हैं तो रीडर को ये पता चल जाता है कि रिसर्च प्रोजेक्ट को किस लिए परसू किया गया। सो रीडर फैमिलियर हो जाता है विद द व्हाई ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। अब रिटन रिपोर्ट को क्लियर होना चाहिए,
आपकी रिटन रिपोर्ट से रीडर को ये पता चले कि क्या आर्ग्यूमेंट्स आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से फैक्ट्स को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपकी स्टडी के रिजल्ट्स को एग्जामिन कर सके, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस को देख सके और इवेंचुअली एक्सेप्टेबल रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो एज वी नो कि हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, सो उस गैप को जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स और डिजायर्ड स्टेट में गैप है उसको क्लोज किया जा सके, उसके लिए हम रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके उसके लिए हम रिसर्च से हमें जो फाइंडिंग्स आ रही होती है, रिसर्च रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि गैप को क्लोज किया जा सके बिटवीन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड द डिजायर्ड स्टेट। सो आपकी रिपोर्ट को क्लियर होना चाहिए, वेल रिटन होना चाहिए, इसमें रीडर को पता चले कि आपने किन फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया, रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी क्या थे, कंक्लूजन्स क्या रहे, रिकमेंडेशंस क्या है और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। द पर्पस ऑफ द रिटन रिपोर्ट। Research reports can have different purposes and hence the form of the written report will vary according to the situation. It is important to identify the purpose of the report so that it can be tailored accordingly. If the purpose is simply to offer details on some specific areas of interest requested by a manager, the report can be very narrowly focused and provide the desired information to the manager in a brief format. अब रिसर्च रिपोर्ट्स के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं और फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट की रिपोर्ट किस फॉर्म में होगी वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पर्पस ऑफ द रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करें कि आपकी रिपोर्ट का पर्पस क्या था, ताकि उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जा सके, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट को तैयार किया जा सके। अगर आपकी रिपोर्ट का पर्पस सिर्फ ये था कि आपने कुछ एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है तो आपकी रिपोर्ट नैरोली फोकस्ड होगी और वो आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन दे रही होगी ब्रीफ फॉर्मेट में। सो आपका जो पर्पस है रिपोर्ट का उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। A different form of report will be prescribed in some cases where a manager asks for several alternative solutions or recommendations to rectify a problem in a given situation. Here the researcher provides the requested information and the manager chooses from among the alternatives and makes the final decision. In this case, a more detailed report surveying past studies, the methodology used for the present study, different perspectives generated from interviews and current data analysis, and alternative solutions based on the conclusions drawn from there will have to be provided. How each alternative helps to improve the problem situation will also have to be discussed. अब जब हम रिपोर्ट्स की फॉर्म्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस में मैनेजर्स ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस चाहते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है तो मैनेजर्स को रिकमेंडेशंस या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे रिसर्चर ने रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है और मैनेजर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से चूज करता है और फाइनल डिसीजन देता है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसमें पास्ट स्टडीज को आप डिस्क्राइब करेंगे, मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे, यानी आप लिटरेचर एक्सप्लेन करेंगे, मेथोडोलॉजी आपने कौन सी यूज की उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेजेंट स्टडी में आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो इंटरव्यू से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जनरेट हुए, करंट डाटा एनालिसिस से जो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले आप उनको एक्सप्लेन करेंगे और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करेंगे कि जो आपके पास कंक्लूजन्स की बेस पे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डेवलप हुए आप उनको एक्सप्लेन करेंगे और मैनेजर उन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन, एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेगा। आप इसमें ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑल्टरनेटिव किस तरह से प्रॉब्लम सिचुएशन को सॉल्व करेगा और प्रॉब्लम को किस तरह से बेहतर तरीके से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक डिफरेंट तरह की रिपोर्ट होगी कि जब आपको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट दें, उसमें आप तमाम डिटेल्स बताएं, उसमें आप लिटरेचर रिव्यू मेंशन करें, मेथोडोलॉजी मेंशन करें, इंटरव्यूज या आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसके रिजल्ट्स को मेंशन करें, एनालिसिस को मेंशन करें और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें और ये भी बताएं कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
Yet another type of report might require the researcher to identify the problem and provide the final solution as well. That is, the researcher might be called in it to study a situation, determine the nature of the problem, and offer a report of the findings and recommendations. Such a report has to be very comprehensive, following the format of a full-fledged study. A fourth kind of research report is the very scholarly publication presenting the findings of a basic study that one usually finds published in academic journals. अब फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट में हमारे पास कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें रिसर्चर ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और फाइनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पर आप नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और आप अपनी एक ऐसी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं जिसमें आप फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस एक्सप्लेन करते हैं। अब ये रिपोर्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ये एक फुल फ्लेज स्टडी की फॉर्म में होती है। फोर्थ काइंड की अगर हम बात करें तो ये वो रिपोर्ट होती है जो आप डिफरेंट एकेडमिक जर्नल्स में जिस तरह की रिपोर्ट्स देखते हैं कि आपने स्कॉलरली पब्लिकेशन की फॉर्म में अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया, सो आप इनको एकेडमिक जर्नल्स में पब्लिश भी करवा सकते हैं। Then characteristics of a well-written report. Despite the fact that report writing is a function of the purpose of the study and the type of audience to which it is presented and accordingly has to be tailored to meet both, certain basic features are integral to all written reports. Clarity, conciseness, coherence, the right emphasis on important aspects, meaningful organization of paragraphs, smooth transition from one topic to the next, choice of words and specificity are all important features of a good report. The report should, to the extent possible, be free of technical or statistical jargon unless it happens to be of a technical or statistical nature. Care should also be taken to eliminate grammatical and spelling errors. अब जिस तरह से हमने पहले बात की कि रिसर्च रिपोर्ट की तरफ आप जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या था और ऑडियंस कौन है आपके जिनको आपने रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, और आप इन दोनों चीज़ों को माइंड में रख के रिपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं, रिपोर्ट को लिखते हैं। अब कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो एक वेल रिटन रिपोर्ट में होने चाहिए। आपकी रिपोर्ट को क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर एम्फेसिस होना चाहिए, पैराग्राफ्स को मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स प्रॉपर होनी चाहिए, आप सही अल्फाज का इस्तेमाल करें और आपकी रिपोर्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये तमाम आपकी एक अच्छी रिपोर्ट के फीचर्स होते हैं। अब रिपोर्ट को जहां तक पॉसिबल हो टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल एरर्स से फ्री होना चाहिए, यानी उसमें टेक्निकल या स्टैटिस्टिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह से ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स को भी अवॉइड करने की जरूरत होती है। Any assumptions made by the researcher should be clearly stated in the report and facts rather than opinions provided. The report should be organized in a manner that enhances the meaningful and smooth flow of materials as the reader progresses through it. The importance of the appearance of the report and its readability cannot be overemphasized. Appropriate headings and subheadings help organize the report in a logical manner and allow the reader to follow that transition easily. अब अगर रिसर्चर की कुछ assumptions हैं तो उनको भी क्लियरली स्टेट करने की जरूरत होती है। सो आप रिपोर्ट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो मीनिंगफुल हो और मटेरियल का स्मूथ फ्लो हो। Now, contents of the research report. A research report has a title page, an executive summary or an abstract, a preface, a table of contents, and sometimes a copy of the authorization to conduct the study. All reports should have an introductory section detailing the problem studied, the purpose of the study, and the research questions, giving some background of what it relates to and setting the stage for what the reader should expect in the rest of the report. The body of the report should contain a conceptual background, details regarding the framework of the study and hypothesis, in case of deductive research, the sampling design, data collection methods, analysis of data, and the results obtained. The final part of the report should present the findings and draw conclusions. अब आपके रिसर्च रिपोर्ट में टाइटल पेज होना चाहिए, एग्जेक्टिव समरी होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स होने चाहिए, और अगर कोई ऑथराइजेशन चाहिए थी आपको स्टडी कंडक्ट करने के लिए तो उसकी कॉपी भी आप
अटैच करेंगे। अब तमाम रिपोर्ट्स में एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है जिसमें आप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या था, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या था, रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे, आप स्टडी का बैकग्राउंड एक्सप्लेन करते हैं, आप ये बताते हैं कि किस लिए हमने स्टडी को कंडक्ट किया। सो इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आप इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अब बॉडी ऑफ द रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड होता है। इसमें आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करते हैं, हाइपोथेसिस जो आपने डेवलप किए उनको एक्सप्लेन किया जाता है, सैम्पलिंग डिजाइन को एक्सप्लेन करते हैं, डाटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में बताते हैं, डाटा एनालिसिस के बारे में बताते हैं और रिजल्ट्स जो आपने ऑब्टेन किए उनको एक्सप्लेन किया जाता है। फाइनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट में आप फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं और कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। Now, first of all, the title and the title page. The title of your research report together with the abstract or management summary permits potential readers to obtain a first idea of your study and to decide whether they want to read your report in its entirety. For this reason, you may decide to come up with a descriptive title that accurately reflects the contents of your research or that indicates the methodology used in the research. अब अगर हम टाइटल और टाइटल पेज की बात करें तो जो आपका टाइटल होता है रिसर्च रिपोर्ट का, वो रीडर्स को ये बताता है कि आपकी रिसर्च किस चीज के बारे में है। सो ये फर्स्ट आइडिया देता है रीडर्स को कि आपकी रिसर्च किस चीज के बारे में है और रीडर्स इसको देखकर ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। नाउ द एग्जेक्टिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट। An executive summary or abstract of your research report is placed on the page immediately following the title page. The executive summary is a brief account of the entire research study. It provides an overview and highlights the following important information related to it: the problem statement, sampling design, data collection methods used, the results of the data analysis, conclusions and recommendations with suggestions for their implementation. Then we have table of contents. The logic of the structure of your research report becomes evident not only through choice of words in the titles of the sections but also as a result of the arrangement of the different components of the work. For the reader, the table of contents serves as a guide through your research report. The table of contents usually lists the important headings and subheadings in the report with page references. Table of contents रीडर्स को एक गाइड प्रोवाइड करता है, रिसर्च रिपोर्ट की गाइड के तौर पर एक्ट करता है। ये टेबल वो होता है जिसमें आप इंपॉर्टेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को मेंशन करते हैं। नाउ लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिगर्स एंड अदर मटेरियल्स। इफ द रिसर्च रिपोर्ट contains charts, figures, maps, tables, photographs or other types of materials, each series of these should be listed separately in an appropriate list on the page or pages immediately following the table of contents. अब अगर आपकी रिसर्च रिपोर्ट में कुछ चार्ट्स हैं, फिगर्स हैं, मैप्स हैं, टेबल्स हैं, या इस तरह का मटेरियल है तो आप इनकी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स की लिस्ट के बाद आप इनकी एक एप्रोप्रिएट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप फिगर्स, चार्ट्स, मैप्स या इस तरह के मटेरियल को डिपिक्ट करेंगे। Then the introductory section. The layout of the first chapter is more or less standard. This chapter could contain in the following order: introduction, reasons for the research, research objective and research questions, the scope of the study, research method, managerial relevance, structure and division of chapters in the research report. अब अगर हम इंट्रोडक्शन के चैप्टर की बात करें तो इसमें आपके पास रीजंस फॉर द रिसर्च को एक्सप्लेन किया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन देते हैं, रीजंस फॉर द रिसर्च देते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, स्कोप ऑफ द स्टडी को एक्सप्लेन किया जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, मैनेजरियल रेलेवेंस को एक्सप्लेन करते हैं और रिसर्च रिपोर्ट में मौजूद चैप्टर्स के स्ट्रक्चर और डिवीजन को भी एक्सप्लेन किया जाता है। Then we have the body of the report. The central part of a research report usually has two large sections, a theoretical part and an empirical part. The theoretical part contains an in-depth exploration and a clear explication of the relevant literature. The exact nature of this part depends on the type of study you have done, exploratory, descriptive, or causal. A literature review is more than just a summary of the literature.
The literature review can be concluded with a theoretical framework and number of hypotheses which will be tested in the empirical part of your study. If your research is deductive and causal in nature, avoid elaborations that will ultimately not contribute to a better understanding of the problem or solutions to the problem. अब अगर हम सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो इसके दो सेक्शंस होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और एक एम्पिरिकल पार्ट होता है। अब थ्योरेटिकल पार्ट में आपके पास लिटरेचर रिव्यू होता है। इस पार्ट में आप एक्सप्लेन करते हैं लिटरेचर को। लिटरेचर रिव्यू आपको सिर्फ समरी ऑफ लिटरेचर प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि लिटरेचर रिव्यू आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ लेके जाता है, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, जिनको आप अपने एम्पिरिकल पार्ट में टेस्ट करते हैं। डिडक्टिव और कॉजल रिसर्च में जनरली हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो आप ऐसी एलाबोरेशंस को अवॉइड करें जो आपकी प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ आपको नहीं लेके जा रही या सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रही। The design details such as sampling and data collection methods as well as time horizon, the field settings, the unit of analysis and the result of the study are described in the empirical part of the research report. The information provided here should enable the reader to replicate the research. In the case of experiments, the empirical part should therefore at the very least contain the components, participants, material and method. In the case of survey research, you should include the component, participants, method and if relevant material. अब डिजाइन डिटेल जैसा कि सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन मेथड्स, टाइम होराइजन, फील्ड सेटिंग और यूनिट ऑफ एनालिसिस आपके एम्पिरिकल पार्ट में मेंशन होते हैं। नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. The aim of this part of the research report is to interpret the results of the research with regard to the research questions. This is a very important aspect of the research report. Readers often skip the method section and move straight to the conclusions of the research. For this reason, the discussion should stand on its own and should form a whole with a beginning and an ending. Include the following aspects in your discussion: the main findings of your research, the managerial implication of these findings, recommendations for implementation and a cost-benefit analysis of these recommendations, the limitations of your study, and suggestions for future research following up on your research project. Then references. Immediately after the final part of the research report, starting on a fresh page, a list of the references cited in the literature review and in other places in the report will be given. अब फाइनल पार्ट की अगर हम बात करें तो फाइनल पार्ट में आप अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च रिपोर्ट का पार्ट, क्योंकि ऑफन मैनेजर्स मेथड सेक्शन को स्किप कर देते हैं और कंक्लूजन्स को रीड आउट करते हैं। इसलिए ये सेक्शन जो है ये एक कंप्लीट सेक्शन होना चाहिए, इसकी बिगनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर एंड होना चाहिए। इसमें आपके पास आपके डिस्कशन में कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। आप मेन फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करें, मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लेन करें, रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ दीज रिकमेंडेशंस को बताया जाता है, आपकी स्टडी के लिमिटेशंस और सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च को एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। आफ्टर दैट देयर विल बी रेफरेंसेस। Then we have appendix. The appendix, which comes last, is the appropriate place for the organization chart, newspaper clippings or other materials that substantiate the text of the report, detailed verbatim narration of interviews with members and whatever else might help the reader follow the text. It should also contain a copy of the questionnaire administered to the respondents. If there are several appendices, they should be referred as Appendix A, Appendix B and so on and appropriately labeled. So at the end आप appendix mention करते हैं। इसमें आपके पास organization charts हो सकते हैं, newspaper clippings हो सकती हैं और इसी तरह से आपके पास copy of the questionnaire जो आपने administer किया उसकी copy आप यहाँ पर attach कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा appendix है तो आप इसको mention करेंगे as Appendix A, Appendix B and so on. आज हमने रिपोर्ट राइटिंग को डिस्कस किया कि जब आप रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं तो आप किस तरह से एक बेहतर रिपोर्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।